Friends, good morning and welcome to my science class. Today we shall discuss all the question answers related to the fundamental unit of life, that is chapter number 5. Okay, so let's take first question number 1. Who discovered cells and how? So students, we are well known about it. Robert Hooke discovered cells in 1665 while examining a thin slide of cork through a self-designed microscope. He saw that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. These small boxes are called cells. तो रबर्ट हुक प्रथमे 1665 रे सेल डिस्कवर करथिले तांकर सब बड़ माइक्रोस्कोप थिला बड़ माइक्रोस्कोप ताको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कहा जाउतिला तापरे कोन नुआ इम्प्रूव्ड वेराइटी माइक्रोस्कोप रे आ जने कोन सेल डिस्कवर करथिले जोटा कि हमर मॉडर्न सेल बोली कहा जाउतिला तांकर नाम होचंती ल्यूएन हुक के ल्यूएन हुक। तो नेक्स्ट जीवा सेकंड क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर समस्ते बुझी पारथिबो नै कि रबर्ट को 1665 रे से जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप रे जो स्ट्रक्चर से देखिथिले ताको छोट छोट कंपार्टमेंट थिला। तुमको से विषय आगे मुझे कही छोट छोट कंपार्टमेंट बा स्मॉल बॉक्स को कौन कहगला सेल बोली कहगला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जवा। व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, सो एटा होची फंक्शनल यूनिट। The cell is capable of independently carrying out all necessary activities of life. So they are called basic or functional unit of life. जेहेतु सेल कोश निज भितर से इंडिपेंडेंटली सब कार्य माने एक्टिविटीज ऑफ लाइफ जीवन बंचापी निज जीवंत शरीर भितर जो सब कार्यक्रम चले सेल भितर से हो पारि था। तेणु से दे आर कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो प्ले। सो नेक्स्ट जी 3 नंबर क्वेश्चन एटा नेक्स्ट होचे हमरो जीवा। सो नेक्स्ट देखिए प्ले क्वेश्चन नंबर 1 एटा हमरो 61 पेज नंबर 61 रे अछि। ओके, सो पेज नंबर 61 रे अछि हमरो कोन हाउ डू सब्सटेंस like carbon dioxide and water move in and out of the cells discuss। माने how do substance like carbon dioxide अंगारकाम्ल आ जल सेल भितर को केमती जिबा आसीबा सेल भितर को केम जाए सेल भितर बाहर को केमती आसी डिस्कस कर बोली से कहिछि। सो ये आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड मूव बाय डिफ्यूजन एंड वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। हमको दुईटा प्रोसेस मु तुमको कही डिफ्यूजन ऑफ different gas particles into the cell and out from the cell through the and other that is called water moved by the process osmosis, that is called selectively permeable membrane। से question number 2 अछि why the plasma membrane called selectively permeable cells। so a plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allow the entry and exit of some substance, not all। so special substance विभिन्न माने केतेक निर्दिष्ट जिनिस ही सेल भितर को से छाड़ी पारिबो। जेमती जगुआटी गेट रे जगी तो समस्त को छाड़िबो नाही, सेमान को नागा पचारि के जदी से जाई परिवार जे जाई परिवार अछि तार योग्यता से भितर को जाई परिबो कोन से अनुष्ठान को। ओके, सो आम जमती इनकमिंग आउटगोइंग रजिस्टर मेंटेन करुचे। सो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेमती सिलेक्टिव जिनिस ही सेल भितर को छाड़िबो। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट गो टू पेज नंबर 63। ओके, पेज नंबर 63 रे कोन अछि देखो डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। एटा निश्चित तुम परीक्षा पढ़ो। सो यार डिफरेंस तुम
जानिच आ थ डिस्कशन करदे। सो प्रोकार्योटिक जनरली स्मॉल साइज 1 to 10 मिली माइक्रोमीटर है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10 to the power 6 मीटर तुम जानिच दैट इज 1 मिलियन मीटर। आउ सेमती यूकार्योटिक सेल रो साइज लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर। तापरे ई प्रोकार्योटिक सेल रो न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियर। सो प्रोकार्योटिक सेल जोटा कि प्रिमिटिव सेल जोटा कि पुणा कालिया सेल बोली कहती से कौन तार न्यूक्लियर मेम्बर न थाए आउ तार जो सब्सटेंस गुड़िक थाए से गुड़िक न्यूक्लियड कही था। सेमती न्यूक्लियर रीजन is well defined and surrounded by nuclear membrane in eukaryotic cell। eukaryotic cell रे nuclear membrane थाए भितर विभिन्न प्रकार कौन न्यूक्लिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड organelles सेमती थाए जेमती plastids mitochondria आउ आसला तमर कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुड़ा सब थाए। सो इन प्रोकार्योटिक सेल देयर इज सिंगल क्रोमोसोम इन यूकार्योटिक सेल देयर आर मोर देन वन क्रोमोसोम। सेमती इन प्रोकार्योटिक सेल मेम्ब्रेन इज बाउंड सेल organelles absent मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles absent किंतु यूकार्योटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles आर प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन देख नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन अच्छी कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सो जहार निजर जेनेटिक मटेरियल थाए बा जीन थाए द टू ऑर्गेनेल्स which have their own genetic materials are mitochondria and plastids। very good, it is page number 65 रो। सेमती क्वेश्चन नंबर 2 देखो if organisms of a cell is destroyed due to some physical and chemical influence what will happen? The cell will not be able to revive and lysosome will digest it। सेति तो lysosome को कहती प्ले suicidal bag तो ताको कहीं कहती कौन से प्रकार आमर से विषय देखा आम व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स। ओके ये हैग लिखा है बोले टिके तुम ये कर दो बैग। ओके बैग सुइसाइडल बैग्स। So when the cell gets damaged, lysosome may burst and enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicidal bag। आत्मघाती मुणा उड़िया रे कहले ना कौन रे मुणी जहाँ भी हो। सो लाइसोसोम रो काम सेटा कौन से प्रकार जिनिस माने हमरो डैमेज हो गला बॉडी पार्ट बोले सेटा जाके सेटा गिरी देबो से नहीं रे। हो नेक्स्ट जाऊ नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन व्हेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। वेरी गुड स्टूडेंट्स, तुम भल जानिच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स दैट आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। नहीं कि प्रोटीन फैक्ट्री को कहती राइबोसोम्स नहीं कि। सो राइबोसोम भितर प्रोटीन तैयारी हुए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहती प्ले पावर हाउस। वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखिए मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन दी मेक ए क्वेश्चन एक्सरसाइज पड़े आसला आम 67 पेज। सो मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन दी वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल भितर क्विकली डिफरेंस देखीदे भितर आम पढ़ीचे। प्लांट सेल्स हाव सेल वाल प्लांट सेल रो सेल वाल थाए क्लोरोप्लास्ट थाए तार दे डू नॉट हाव सेंट्रियोल्स सेटा गोटे मन रखो। तापर वेसिकल्स आर बड़ बड़ जिनिस लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द प्लांट सेल। एनिमल सेल रे सेल वाल न थाए खाली तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन थाए। दे डू नॉट हाव क्लोरोप्लास्ट से निजे खाद्य निजे तैयारी करि पारे नाही
एनिमल सेल रे सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट इन देम छोट छोट वैक्यूल्स थाए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल। तो नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 2 को हाउ प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। एटा तुमको बहुत भलरे बुझे देछि। प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली स्मॉलर इन साइज 1 to 10 picometers. Nuclear region is poorly defined. The cell organelles are not membrane bound and they have a single chromosome. Eukaryotic cell is generally larger size. Nuclear region is well defined with nuclear membrane. Membrane bound cell organelles are present and has more than one chromosome. तो ये विषय आम आगु डिस्कसन करें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल विषय। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 को व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड ब्रेक्स डाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा ब्रेक डाउन बा भांगी गले कौन सी प्रकार आघात असुविधा हो गले प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स एंड ब्रेक्स डाउन हो कौन हम इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptures and breaks down then molecules of the some substances will freely move in and out. So plasma membrane को selectively permeable cell नहीं कि से selectively permeable cell टा सीटा कौन सी सिलेक्टेड जिनिस को ही भितर को पठाए आ भितर बाहर को पठाए तेणु सेटा जदि भांगी गला सेटा जदि कुआडे उड़े गला तुम जदि चोरे कि नहीं गल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन हम सब ऑर्गेनेल गुड़िक फ्रीली मुव कर सब्सटेंस गुड़िक जीवास फ्रीली हो पार। तो व्हाट वुड हैपन इफ द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus। पिला माने गोल्गी apparatus नथिले कौन हम तुम तो देखि पिले गोल्गी apparatus विषय में तुमको कही। सो गोल्गी apparatus नथिले कौन हबो। So Golgi apparatus has a function of storage, modification and packing of products in vesicles. So if there were no Golgi bodies, packing and dispatching of material synthesized by the cell will be stopped. तो Golgi apparatus द्वारा ही जिनस पत्र स्टोरेज करिवो मॉडिफिकेशन करिवो पैकिंग करिवो स्टोर कीपर भलिया नहीं कि। तो गोल्गी apparatus नथिले पैकिंग आउट डिस्पैचिंग हबो किरे हैं तो आम गोटे डिस्पैचर दरकार ना कौन सी जिनस पैक करके सब जिनस गोटे जगह छाड़ी ताको को जिनस कुआड़े जीवो गोल्गी apparatus काम एजेंट भाया से काम करे नहीं कि। सो बस स्टैंड जमती बस एजेंट सब किए पैसेंजर कौटे जीव कौ बस जीव से सब सेटिंग करके दिए हैं माने से जो आमर कुली माने जमती जिनस पत्र ऊपर पैकिंग फैकिंग करी सब करती सेमती गोल्गी apparatus से काम कर दिए। तापर देखिए पिले क्वेश्चन नंबर 5 which organelle is known as powerhouse of the cell। ए विषय तुमको आगु कही व्हाई mitochondria is known as powerhouse of the cell because it releases energy required for the different activities of the life। ATP गोटे कॉइन अच्छी नहीं कि ATP adenosine triphosphate बा कॉइन से गुड़िक शक्ति मुद्रा बोली कहते नहीं कि। तो नेक्स्ट जो 6 नंबर को where do lipids and protein constituting the cell membrane get synthesized। Lipids and proteins are synthesized in endoplasmic reticulum। So endoplasmic reticulum गोटे organelle अच्छी से पिले लिपिड आउ प्रोटीन सिंथेसिस होची तैयारी होची मन रखि थिबो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 जीवा हाउ डज अमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड। देख पिले अमोइबा विषय में तुमको बहुत जिन वीडियो भी छाड़ी। अमोइबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन व्हिच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल्स। तो देखो ये अमोइबा केमती फूड ग्रहण करुची एंडोसाइटोसिस इन अमोइबा ता भीतर खाद्य केमती नेउची। So amoeba take its food by cell membrane which form the food vacuoles। Vacuoles are the storehouse of the food। 7 नंबर गला नेक्स्ट जो what is osmosis। Osmosis is a process of movement of water molecules from a region of higher water concentration through a semi permeable membrane to a region of
लोअर कंसंट्रेशन लोअर वाटर कंसंट्रेशन तो जोटे बेसी परिमाण रे पानी थिबो आ कम परिमाण रे पानी थिबो से आड़ को बेसी रु कम आड़ को जीवाटा को ऑस्मोसिस कह जाय ऑस्मोसिस रिलेटेड टू फ्लूइड और लिक्विड और पानी पानी सेल भीतर को जीवा आसवा करिया प्रणाली को कौन कह जाए ऑस्मोसिस वेरी गुड सो यहाँ गला 8 नंबर प्ले 9 नंबर क्वेश्चन टा आम देखा 9 नंबर क्वेश्चन तुम सब बही तुम पाखे अच्छी सब 9 नंबर कैरी आउट फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट से कौन कही एक्सपेरिमेंट गोटे कराई तो कौन क्वेश्चन अच्छी सेटा टेक 4 peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. One of each potato cup should be made from a boiled potato. Put each potato cup in top containing water. Now keep a cup A empty air. Put 1 teaspoon sugar in cup B. Put 1 teaspoon salt in cup C. Put 1 teaspoon sugar in boiled potato cup D. Keep these for 2 hours. Then observe the 4 potato cups and answer the following. तो आमे कौन कले पिले 4 peeled potato halves and squeeze each one out of the make potato cups. सेठा हम potato cup 4टा तैयारी कले नहीं कि So, explain question number 1. Explain why water gathers in hollowed portion of the B and C. तो B and C रे water gathers in B and C because in both the situation there is a difference in concentration of water in the through and water in cups of potato. Hence osmosis takes place as potato cell act as semi permeable membrane એટલે potato cell टा कोन semi permeable membrane भली काम कला bit 2 कोन देछि पिले why is potato a necessary for this experiment तो potato A is necessary for this experiment for comparison it act as a control. So bit 3 hochi why or explain why water does not gather in hollowed out portion of the A and D. A and D रे hollowed out portion रे A out D एटे क्वेश्चन देखो अच्छे चित्र अच्छी ए एम्प्टी पोटाटो आ एटे बॉइल्ड पोटाटो एम्प्टी पोटाटो कैविटीज एम्प्टी पोटाटो कैविटी माने फांका स्थान तो वाटर डज नॉट गैदर इन होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी आज कप ऑफ ए डज नॉट हैव चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर वाटर टू फ्लो फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कंसंट्रेशन शुड बी हायर दैन द अदर तुम तो पिले भलरे जानिछ ऑस्मोसिस केते बेले संभव जेते बेले तमें तुमको आउ गुरु भी कही हाइपोटोनिक्स आउ आइसोटोनिक्स विषय तो आम जानिले कंसंट्रेशन जो गोटे जगह बेसी अच्छी बोले आ गोटे जगह को लो कंसंट्रेशन जोड़ी थो से ऑस्मोसिस प्रोसेस रे वाटर ट्रांसफर हम इन कप डी द सेल्स आर डेड एंड हेंस द सेमी permeable membrane does not exist for the flow of water and no osmosis takes place in D. तापर देखिए पिले which type of cell division is required for growth and repair of body and which type involved in formation of gamete very good so solution हो चाहे देखि देबा there are two ways in which cell divides हमें पिले भल भाव रे जानि छे माइटोसिस और मेयोसिस दी प्रकार सेल डिवीजन हुए सेल डिवाइड कोष गुड़िक वंश वृद्धि हुए नहीं सो माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी whereas meiosis is a type of cell division which results in formation of gametes
माइटोसिस और मेयोसिस मध्य फरक तुम एतकी जान माइटोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी माइटोसिस द्वारा ग्रोथ और रिपेयरमेंट सब काम हुए तुम चैप्टर नंबर 5 रा 66 पृष्ठ सब डिटेल अच्छी तुम देखिपर सेमती मेयोसिस रे कौन हुए गेमेट्स फॉर्मेशन हुए विषय तुम आगे आग क्लास को पढ़ सो वी कैन डिफरेंशिएट इट वेरी गुड स्टूडेंट सो यहाँ थिला हमर क्वेश्चन आंसर आवर सबू क्वेश्चन माने हमर चैप्टर नंबर 5 रो एक क्वेश्चन रो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन प्रति पेज रे जहाँ जहाँ क्वेश्चन अच्छी मु तुमको सब गुड़ाक आंसर ये डिटेल बुझे देली सो नाउ योर ड्यूटी इज टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड रिमेम्बर इट आमे पिले ज्ञान आहरण करवा आमे खाली घोषिबा नहीं माने गोटे चैप्टर सार देइचंती घोषिबा खाली नहीं एगुड़ी को आमे कौन करवा वी हैव टू रिमेम्बर फॉर फ्यूचर यूज ओके स्टूडेंट्स थैंक यू